Hello students, how are you? I hope you are fine. Today we'll be starting with heating effects of current. Before starting with heating effects of current, we had left over with a few numericals on electrical energy. We had done a few numericals on electrical energy, household billing, etc. We'll do a few more and then start with the heating effect of current. Moving on to the first numerical today. The first one is a household has 300-watt bulbs lighted for 2 hours daily. 10 50-watt fans lighted for 6 hours daily, and a 1.5 kilowatt geyser working for 2 hours daily. Calculate the electricity bill of the house for 30 days at rupees 6 per unit. A household has 300-watt bulbs lighted for 2 hours daily, 10 500-watt fans, 50-watt fans working for 6 hours daily, and a 1.5 kilowatt geyser working for 2 hours daily. Calculate the electricity bill of the house for 30 days at the rate of rupees 6 per unit. Now you know that electrical energy in kilowatt hour is equal to number into power in kilowatts into time. So we'll take different appliances as we done in the last class. So what will be appliance 1? Appliance 1 number is 3. Power is N1 is 3, P1 is 100 by 1000. And what is T1? T1, time for the first one, 2 hours. This is appliance 1. Appliance 2, number is 10. 10, power is 50 upon 1000 kilowatt. And time is 6 hours. What is appliance 3? Appliance 3 is a 1.5, that is N3 is equal to 1. Power is given in kilowatt, no need to change it. And then time 3 is in hours, this is 2 hours. So what is energy per day? E1 is equal to N1 into P1 into T1 is equal to 3 into 0.1 into 2. That is equal to 0.6 kilowatt hour. What will be E2 equal to 10 into 50 by 1000 into 6. 5 2s are 2 3s are 3 kilowatt hour. What will be E3 equal to 1 into 1.5 into 2 is equal to 3 kilowatt hour. So what will be total energy per day? Per day 0.6 plus 3 plus 3. That is equal to 6.6. Do you understand? This is for 1 day. Energy for 30 days. 6.6 into 30. That is 198 kilowatt hour. So what will be the bill equal to? Total units 198 into 6. That comes out equal to rupees 1008. Rupees 1008. So that is the numerical from the household electricity. If it is given in kilowatt, multiply directly. If the power is given in watts, divide by 1000 to get it in kilowatts. Is that clear, beta? So this is all about the household electricity. We are now moving on to the heating effects of current. Heating effects of current. Now, whenever current flows through a conductor, flows through a conductor, it causes heating.
Why is heat caused? Heat is caused due to the friction. Friction means the resistance offered by the kernels, the vibrating kernels, due to which the current produces heat. Now, what are the factors on which the heat produced by a conductor depends? That we have to do, and then the numericals and the applications of heating effect of current. So, I am starting with heating effect of current. Heating effect of current. Heating effect of current. Whenever current flows through a conductor, heat energy is produced. Whenever current flows through a conductor, heat energy is produced. हमने टोस्टर्स में, ovens में, इलेक्ट्रिक बल्ब में देखा होगा हीट प्रोड्यूस होती है. जिस भी चीज में से करंट पास करता है वो आपको हॉट नजर आती है. So that means whenever current flows through a conductor, heating effect is there. Now what does this heat energy produced by the current depend upon? That is factors affecting heat produced by a conductor. Factors affecting heat produced by a conductor. Number 1 is current. जितना ज्यादा करंट होगा, जितना मोर द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ज्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी. 2 एम्पियर का करंट है तो हीट कम होगी, 5 एम्पियर्स का है तो थोड़ी ज्यादा होगी. सो पहला फैक्टर है करंट. हीट प्रोड्यूस्ड बाय कंडक्टर is directly proportional to the square of the current flowing through the conductor. So H, this is heat energy, is directly proportional to I square, where I is the current and H is the heat energy. H is the heat energy 1. So H is proportional to I square. If the current is doubled, heat energy will be 4 times square of I. If it is tripled, it will be 9 times. If it is 5 times, then it will become 25. So heat energy is directly proportional to the square of the current flowing through the conductor. So H is proportional to I square. I hope you understand. This was the first factor. H is proportional to I square. Second factor. Factor number 2. The first is H is proportional to I square. It's a very important topic. You'll get it in the boards also. Second is resistance of the conductor. Now you start imagining this. Imagine this. If the resistance is more, opposition is more, what will be the heat energy? Will it be more or less? It will be more. जितनी ज़्यादा resistance होगी, जितनी ज़्यादा resistance मिलेगी करंट के फ्लो को, उतना ज़्यादा heat produce होगी. So that means resistance of the conductor, heat energy produced is directly proportional to the resistance offered by the conductor. Resistance offered by the conductor. So that means H is proportional to R. This is equation number 2. Here R is the resistance and H is the heat energy. हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो ली थी दैट वी टुक इन किलोवाट आवर, बट हीट एनर्जी फिर से ऐसे यूनिट्स में, जूल्स में, मतलब जो पावर होगी वो किस में लेनी होगी, वॉट्स में. ठीक है. सो H इज प्रोपोर्शनल टू R. दिस इज सेकंड वन.
third factor is time for which current is passed. Now tell me, if the current is passed for 5 minutes and then the current is passed for 10 minutes, in which case more heat will be produced? In the case in which the time is passed for 10 minutes. जितने ज़्यादा टाइम के लिए हम करंट को फ्लो करेंगे उतनी ज़्यादा हीट एनर्जी कंडक्टर में प्रोड्यूस होगी. So that means heat energy is directly proportional to the time for which the current is passed. So heat energy is directly proportional to time for which current is passed. So H is proportional to T. T here is not the temperature, it is the time in seconds. Time, H is the heat energy. This is equation number 3. So that means heat energy produced by a conductor, produced in a conductor or current carrying conductor is directly proportional to the square of current flowing through a conductor, is directly proportional to the resistance of the conductor, and directly proportional to the time for which the current is passed. Now I will combine all the three. I will combine 1, 2 and 3 and then get a formula. So combining 1, 2, 3 एंड कैंसलिंग. जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो हम उसमें क्या लगाते हैं, एक कांस्टेंट लगाते हैं. लेकिन यहाँ पे जो तीनों में कांस्टेंट लगेंगे वो म्यूचुअल कांस्टेंट्स कैंसिल आउट हो जाएंगे. एंड कैंसलिंग आउट म्यूचुअल कांस्टेंट्स वी गेट H is equal to I square RT. H is equal to I square RT. This is the formula. This is what? The heat in joules. I is the current in amperes. R is the resistance in ohms. And T is the time in seconds. This is called जूल इफेक्ट. क्या कहते हैं इसे? जूल इफेक्ट और जूल्स लॉ. दिस फॉर्मूला H is equal to I square into R into T is called the Joule effect. Have you understood? This is the formula. This formula has the values have to be put in the SI units. In the SI unit, heat will be in joules. Electric energy is in kilowatt hour, where you take the power in kilowatt and time in hours. But heat energy has to be in joules. Is that clear? So this is H is equal to I square RT. Now, अगर कोई और न्यूमेरिकल आ जाए डिफरेंटली तो उसमें देखिए ध्यान देना. What is I square R? This is power. We do that say P is equal to I square R. So H is also equal to P into T, where P is the power in watts and T is the time in seconds, and H is the heat energy in joules. But P is also equal to V square. P is also equal to V into I. So H किसके बराबर आ जाएगी? पावर की का V इंटू आई इंटू टी. ये भी एक फॉर्मूला आ जाएगा. ये फॉर्मूला तो जूल इफेक्ट का है ये. अगर वोल्टेज और आई दिया हो, करंट दिया, तो V इंटू आई इंटू टी आ जाएगा. और पावर क्या होती है? V स्क्वायर बाय आर भी होती है. सो H का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? V स्क्वायर बाय आर इंटू टी. ये सारे सिमिलर है. बट यू हैव टू टेक इन to consideration that all the quantities have to be taken in SI units. Is that clear? I hope you are studying at home. Please beta, keep on studying, put in the doubts. You are not sending me doubts now. Why? I don't know. Keep on sending your doubts so that the doubts can be cleared. Either you are able to solve all the questions from the PDF, or you are not trying to solve the questions from the PDF. This can be two cases.
If you find any difficulty, this is a tough chapter, beta. The questions are tough. Please do all the NCERT questions from the assignment. If you have any problem, please send it to me through WhatsApp so that they can be taken on Friday. Is that clear? So that you have to keep in mind. Please keep on doing. We are just towards the end of the chapter. In one class or more, we'll be starting with the first chapter in chemistry. And then the chapters will pile on till the lockdown ends. The first chapter in chemistry is a very small one. It will take about 3-4 classes. And then the tougher chapters will start. Okay? So this is Joule's effect. And now if you have to do the numericals from Joule's effect, I square into R into T, these are the formula. So simple thing is H is equal to P into T. P का formula कोई भी डाल सकते हैं. I square RT. V into I into T. Or you can put V square by R into T. Any formula. But the general formula of Joule effect is I square RT. Is that clear? We are now moving on to the applications. Then we'll start with the numericals on Joule effect. Applications of heating effect of current. कहाँ का अप्लाई होता है हीटिंग इफेक्ट? Applications of heating effect of current. पहला है बेटा, heating effect of current is used in the heating appliances. The heating appliances what? Heating appliances कौन से होते हैं? टोस्टर्स, ovens, इनके अंदर क्या होता है? एक नाइक्रोम की फिलामेंट होती है. किसकी बेटा? नाइक्रोम. नाइक्रोम की खास बात क्या होती है? इसकी रेजिस्टेंस बहुत हाई होती है. रेजिस्टेंस बहुत हाई होती है, जिसके कारण थोड़ा सा करंट डालने भी इसमें हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा आता है, क्योंकि आई स्क्वायर आर टी, आर के प्रोपोर्शनल होती है हीट. सो रेजिस्टेंस इज वेरी हाई. दूसरा, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, सो दैट अगर ये ज़्यादा हीट हो जाए तो ये मेल्ट नहीं करती. और तीसरा, ये करोजन रेजिस्टेंट होती है. ये 3 प्रॉपर्टीज है हीटिंग एलिमेंट की. तो क्या लिखोगे? सबसे पहला है हीटिंग अप्लायंसेस. The filament of the heating appliances, ये क्वेश्चन आता है बेटा 1 मार्कर, is made up of nichrome which has number 1 very high resistance, जिसके कारण हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा. वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, ये आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हीटिंग अप्लायंसेस. और थर्ड है करोजन रेजिस्टेंस. इसको जो है ये करोड नहीं करता जल्दी, ये करोजन रेजिस्टेंट होती है. कौन कौन सी अप्लायंसेस होती है हीटिंग इफेक्ट के अंदर? ओवन्स हैं, टोस्टर्स हैं, इसके अंदर यूज होता है. सो हीटिंग अप्लायंसेस के अंदर हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट यूज होता है. नाइक्रोम यूज होती है, आपको याद करना है. दिस इज ए filament of nichrome which has a very high melting point so that it does not melt. Number 2, the main property is it has very high resistance, so a small current passing through them heats up the filament to a large extent, and then they are corrosion resistant. So this is what the heating appliances or the application of heating effect towards heating appliances is. So this was the first application, that is in heating appliances. Second application is in lighting appliances. Lighting appliances, ये जो लाइटिंग बल्ब्स हैं, बल्ब की फिलामेंट्स होती है, ये टंगस्टन की बनी होती है. किसकी बेटा? टंगस्टन की. टंगस्टन का भी मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, इसलिए वो जल्दी मेल्ट नहीं करता है. सेकेंडली, टंगस्टन के बाद मेल्टिंग पॉइंट के अलावा उसकी रेजिस्टेंस बहुत हाई है. रेजिस्टेंस हाई होगी तो क्या होगा? हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा. फिलामेंट हीट करेगी, जब वो हीट करेगी तो वो ग्लो करेगी. क्या करेगी? किसी भी बल्ब की फिलामेंट लाइट क्यों देती है? क्योंकि जब फिलामेंट हीट होती है तो वो ग्लो करती है, रेड हॉट हो जाती है, वो ग्लो करेगी जिससे हमें लाइट मिलती है. सो दैट मीन्स
इन फिलामेंट्स का भी मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, रेजिस्टेंस हाई होती है, सो दैट हीटिंग इज कॉज्ड। और तीसरा क्या है, ये भी करोजन रेजिस्टेंट होती है। सो टंगस्टन फिलामेंट is used in lighting appliances like bulbs etc. because of the following. Number 1, high resistance of tungsten. Number 2, high melting point so that the filament does not melt. And number 3, corrosion resistant. This is corrosion resistant. तो लाइटिंग मिलेगी कैसे? जितनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी उतनी फिलामेंट, थिन फिलामेंट जो है वो ग्लो करेगी, जितना वो ग्लो करेगी उतनी लाइट देगी। सो दिस वाज इन लाइटिंग अप्लायंसेस। ओके, now a very important application of heating effect, that is electrical fuse. Do you know what a fuse is? आपको पता है फ्यूज क्या होता है? आजकल तो खैर वो MCB लगे होते हैं, ट्रिप हो जाते हैं, लेकिन पहले फ्यूज होते थे। अब पहले मैं थोड़ा सा आपको फ्यूज के बारे में बता दूं, फ्यूज होता क्या है, और फिर मैं बताऊंगा कि हीटिंग इफेक्ट फ्यूज में कैसे होता है। दिस विल डू इन मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑल्सो इन द नेक्स्ट चैप्टर, बट यू शुड नो वन थिंग अबाउट इलेक्ट्रिकल फ्यूज। Third application is electrical fuse. Electrical fuse. बेटे फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस है, एक थिन वायर होती है, बहुत पतली सी तार होती है। देखिए आपके हाउस होल्ड में क्या होता है, बाहर लाइट आती है पोल से, उसके बाद आपके घर के अंदर पैरेलल में कनेक्शंस होते हैं, उसके डिस्ट्रीब्यूट होती है। मीटर के पास एक मेन फ्यूज होता है, जो मेन इलेक्ट्रिसिटी मीटर है उसके साथ एक फ्यूज होता है। फ्यूज के अंदर एक थिन वायर होती है, आजकल उसे MCB से रिप्लेस किया गया, लेकिन फ्यूज क्या होता है, एक थिन वायर होती है, सॉकेट के अंदर वो ऐसे लिपटी होती है, तो उसको सॉकेट ऐसे लगा दिया जाता है। अब जैसे ही कई बार क्या होता है, पोल से बहुत हाई करंट आ जाता है। जब वो हाई करंट आपके घर में एंटर करेगा, व्हेन इट विल एंटर योर हाउस, तो वो तुम्हारे सारे अप्लायंसेस को अंदर जाके डैमेज कर सकता है। तो फ्यूज वायर क्या होती है, ये वहां पे मीटर के पास लगी है जहां से इनपुट आ रही है। मेरी बात समझ लगी? अब क्या होगा, जैसे ही हाई करंट आएगा, ये जो थिन वायर है ये हीट होगी, ये हीट हो जाएगी, हीट होकर ये ब्रेक कर जाएगी, टूट जाएगी, जिससे करंट अंदर जाना बंद हो जाएगा। तो ये बनी होती है टिन लेड अलॉय की। किसकी बेटा? टिन और लेड का अलॉय होता है, मिक्सचर होता है, उसकी बनी होती है। इसकी रेजिस्टेंस बहुत हाई होती है, इसीलिए जल्दी हीट हो जाती है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट इसका लो होता है, सो दैट ये एकदम से मेल्ट करके ब्रेक कर जाती है, जिससे अंदर के डिवाइसेस जो हैं वो प्रिवेंट होते हैं फ्रॉम शॉक्स एक्सेट्रा और फ्रॉम एक्सप्लोडिंग। इज दैट क्लियर? सो व्हाट इज अ फ्यूज? अ फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस। ठीक है, इलेक्ट्रिकल फ्यूज, फ्यूज इज अ सेफ्टी device which is made of tin lead alloy। इसको टिन का फॉर्मूला SN होता है और लेड होता है Pb। टिन लेड alloy, alloy is a mixture of two or more metals or a metal and a non-metal। ठीक है, whenever एक्सेसिव करंट, जब भी एक्सेसिव करंट enters the household, the fuse wire melts and breaks the circuit। ये सर्किट को ब्रेक करती है, thus preventing other appliances from getting damaged। बाकी अप्लायंसेस जो है वो डैमेज होने से बच जाती है। मैंने आपको बताया कहाँ पे होती है, ये मेन मीटर के पास होती है। जैसे एक्सेसिव करंट आएगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है, रेजिस्टेंस
बहुत हाई होती है, एकदम से होगा ये हीट होगी, मेल्टिंग पॉइंट लो होने की वजह से ये टूट जाएगी, करंट घर के अंदर नहीं जा पाएगा, बाकी अप्लायंसेस आपके फैंस ट्यूब्स सब कुछ जो है वो बच जाएंगे। इज दैट क्लियर? तो फ्यूज वायर के क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं? इट हैज वेरी हाई रेजिस्टेंस, तभी ये जल्दी हीट हो जाती है। नंबर 2, इट हैज लो मेल्टिंग पॉइंट, वेरी हाई रेजिस्टेंस, लो मेल्टिंग पॉइंट, और आपको पता है ये एक एलॉय है तो इसका करोजन रेजिस्टेंट भी होगी। सो दैट इज व्हाट फ्यूज वायर इज। फ्यूज वायर इज अ सेफ्टी डिवाइस फॉर हाउस होल्ड पर्पसेस। I hope you understand the 3 applications of heating effect. First, it is used in heating appliances. Number 2, it is used in lighting appliances. Number 3, it is used in making in the fuse wire. I hope you understand. So this is all about heating effect of current. We have just yet to do the numericals on heating effect of current. Moving on to the numericals on heating effect or Joule effect. We are doing the numericals on Joule effect. In the next class, I will be taking your doubts and I will give you some questions from my side. I will be discussing questions from the PDF file. जो भी क्वेश्चन एनसीईआरटी के थोड़े डिफरेंट हैं उनको करके मैं चैप्टर को ख़त्म करूंगा। नेक्स्ट क्लास में प्लीज़ सेंड सम डाउट्स टू मी, योर डाउट्स कैन बी क्लियर, और आई विल बी डूइंग द न्यूमेरिकल्स फ्रॉम माय साइड आल्सो। आई विल बी डूइंग सम न्यूमेरिकल्स, सम complex numericals from this chapter from the PDF file only. If you have done the PDF file, if you have done the questions on the PDF file, then you can send me the questions. Day after tomorrow, I will also be uploading or sending you exercises on this chapter. 4 or 5 exercises on this chapter electricity that you will solve at home. With any problem, if you have any problems in those exercises, you can WhatsApp me. I'll be sending 4 or 5 practice exercises for you to practice at home because you are sitting idle. Just sitting, relaxing, seeing the TV, and then eating, gossiping, and nothing else. There's one thing called studies also. So that is the word studies. You are so overcome by this corona effect that you don't have anything to do other than the corona every day. Please don't switch on the TV or the news channels for longer hours. सारा दिन तुम कोरोना करके that will bring negativity to you. Just what you have to do is to remain safe. You follow the rules you have to follow in this lockdown. Sanitization, self-sanitization, sanitization of the house. That is the thing. We have to live with corona. We cannot get rid of corona because God knows when it is going to come to an end. So you have to learn how to live with corona. Don't panic, but follow all the rules, all the safety measures you have to take to prevent yourself from corona, but we'll have to live with it. This is not an excuse कि corona है कहाँ पड़े क्या करें डरे हुए हैं ये है। No, अपनी नॉर्मल लाइफ पे चलते जाइए। Don't go out, स्टडीज करिए, एक्सरसाइज करनी है घर पे करिए, सब कुछ करिए, बट यू शुड रिमेंबर वन थिंग, वी हैव टू लिव विद इट नाउ. Maybe for 1 month, 2 months, 4 months, or for our lifetime even. But you have to try to live with it. Live with corona. Don't run away from corona, or don't make corona an excuse for not studying, for not exercising, for not relaxing. Okay? I hope you understand what I mean to say. Please keep on studying. Do more and more questions from the PDF file or from the NCERT. Is that clear? Now moving on to the first question from Joule effect. And a heating appliance is rated at 20 amperes and has a resistance of 40 ohms.
calculate the heat energy produced by the appliance if it works for 10 minutes. If it works for 10 minutes, you are given the current 20 amperes. 20 amperes is the current, resistance is 40 ohms, and time is 10 minutes. Will you change minutes into hours or minutes into seconds? Into seconds, because heat energy has to be calculated in joules. Electrical energy is calculated in kilowatt hour. So 10 minutes is equal to 10 into 60 is equal to 600 seconds. So what is H equal to? I square R into T. H is equal to I square 20 का square into resistance 40 into 600. Am I right? I square R into T. So that will be 400 into 40 into 600. 1, 2, 3, 4, 5. 144 into 10 raised to power 5 joules. 4 4 are 16. Sorry. 96. 400 into 46, 4s are 24, 4s are 96, 96 into 10 raised to power 5, that is equal to 9.6 into 10 raised to power 6 joules. पॉइंट में लगाऊंगा तो ये आपके पास आ जाएगा 9.6 into 10 raised to power 6 joules is the heat energy produced by this conductor. So this was the first numerical from Joule's effect. Is that clear? अब इसमें क्या होता है, V और R भी दिया होगा. अगर V भी दिया हो, R दिया हो, T दिया हो, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? I स्क्वायर R की जगह पे V स्क्वायर बाय R यूज कर लोगे. अगर V और I दिया होगा तो I स्क्वायर R की जगह पे V इंटू I कर लोगे. आपके पास 3 पावर के फॉर्मूले हैं. और एनर्जी क्या होती है? पावर इंटू टाइम. आई होप यू अंडरस्टैंड बेटा. ठीक. नाउ an appliance is rated at 220 volts and 5 amperes. 220 volts and 5 amperes. It works for half an hour. Calculate the heat energy produced. 220 volts and 5 amperes. It works for half an hour. Calculate the heat energy. What is 220 volts? This is V. Voltage is 220 volts. Current is 5 amperes. Time is half an hour. Half into 3600. I want it in seconds. 1800 seconds is the time. Now what is the formula for heat energy? It was I square RT. That is power into time. Power, if power is I square R, power can be V into I also. So use that formula of power. So H will be V into I into T. H will be equal to V 220 into I 5 into 1800. Am I right? बड़ा पावर की जगह पे ये पावर थी, पावर की जगह पे मैंने आई स्क्वायर आर की जगह पे मैंने वी इंटू आई कर दिया. अगर रेजिस्टेंस और वी दिया होता तो वी स्क्वायर बाय आर लगा देता यहाँ पे. सो दिस विल बी 1100 इंटू 1800. 198,000 जूल्स. ये 4 जीरोज हैं. अगर मैं इसको 1.98 कर दूं तो 6 जीरोज हो जाएगी. 10 raised to power 6 जूल्स. सो दिस इज द हीट एनर्जी. Is that clear? So this is how you can form the do the questions. A few questions from heat energy will be discussed in the next class. And now I'll tell you the way how to study. बेटा देखिए प्लीज, जो भी हमने वीडियोस आपके पास है, they are available with you.
You have viewed all the videos. They are on the YouTube. From now, day after tomorrow, will not be putting those videos openly on YouTube. We'll be sending you those videos through the SRCC app, which you'll have to download tomorrow, day after tomorrow. We'll send you the link. You'll download the app and you'll get the videos only through that app only. Nobody else will be able to see that videos. You cannot copy the videos. You cannot forward those videos. Those videos will be private. So you'll have the videos. If you want to revise the chapter, start one video, second, third, fourth, fifth, sixth, and seventh. This is the 8th video today. You see all the 8 videos. Okay? You have an ample amount of time. Write down the main points in your notebook. What I have taught you, do the numericals in the notebook, so you'll get the notes also. There's no other way of copying down notes. Okay? So you'll start the video, listen to the video, and then revise. Probably you may have a test next week. Please mind it. Okay? So because we are coming to the end of this chapter now. Okay? I'll take one more class on electricity and then I'll start with a chapter in chemistry. Is that clear? Thank you.